Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 4. I hope you people are doing good. Today we are going to complete the reading of chapter number 8 of your novel, Great Expectations. इससे पहले हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं that Pip is going to see Estella soon. और वो बहुत एंक्शसली उसका वेट कर रहा है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि किस तरह वो वेलकम करता है एस्टेला को, किस तरह से उसका वेट कर रहा है और क्या होता है एक्चुअली नेक्स्ट में। सो हियर वी गो। वन डे Pip received a note by post. उसको एक नोट मिला था जो उसको पोस्ट किया गया था। It read, I am going to come to London the day after tomorrow on the midday coach. I believe it was arranged that you meet me. Miss Havisham has that impression. She sends you her regards, your Estella. अब वो नोट जो था वो एस्टेला की तरफ से था, जिसमें वो बता रही है कि she is going to London. डे आफ्टर टुमारो यानी परसों का जो दिन होता है उसको डे आफ्टर टुमारो बोला जाता है और वो वहाँ उसको मिलेगी। मिड डे कोच के थ्रू जा रही है। वो मिड डे जो दोपहर की कोच होती है उसको बोलते हैं। और पिप को मुखातब होके कह रही है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें इस सारी अरेंजमेंट के बारे में पता चल गया होगा मिस हैविशम के थ्रू, और वो तुम्हें अपना रिगार्ड्स भेज रही हैं। उसके बाद उसका लेटर जो है वो एंड अप होता है। अब ये नोट ऑब्वियसली जब पिप को रिसीव हुआ होगा तो ही कुड बी वेरी हैप्पी। सो सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। When Pip received this note, he became so anxious that he would have ordered several new suits if he had time. He lost all appetite for food and could do nothing until the time for Estella's arrival. वो इतना खुश था और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो एंक्शियस होता है बेकरार, वो बहुत ज़्यादा बेकरार था। एंड ही वुड हैव ऑर्डर्ड several new suits, और वो बहुत सारे नए सूट जो है वो ऑर्डर कर देता अगर उसके पास इतना वक्त होता तो। अब सिर्फ एक दिन का वक्त था इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। एंड ही लॉस्ट ऑल एपिटाइट। एपिटाइट बोलते हैं भूख को, और उससे अपनी भूख बिल्कुल भूल चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी उसकी भूख, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था उस वक्त तक, जब तक वो कुछ भी नहीं कर पाया उस वक्त तक जब तक एस्टेला वहां पहुंच नहीं गई। At last the coach arrived. Oh sweet darling Estella, how beautiful you look even in your traveling dress, said Pip to himself as Estella got off the कोच। जैसे उसकी कोच पहुंचती है तो वो अब खुद से बात कर रहा है। एस्टेला से तो वो डर के मारे जो है वो बात ही नहीं कर पाता, तो एस्टेला से तो उसने नहीं बोला, लेकिन वो खुद से उसको बोल रहा है कि तुम अपने ट्रैवलिंग सूट में, ट्रैवलिंग ड्रेस में भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। जब वो कोच से बाहर आती है तब वो उसको देख के बोलता है। Pip accompanied Estella to Richmond, where she was going to stay with a friend of Miss Havisham. So Richmond तक उसके साथ जाता है, जहाँ पर उसे एस्टेला को मिस हैविशम की फ्रेंड के साथ स्टे करना है। I'm going to be introduced to people and people will be shown to me, said Estella. I'm sure you will be glad of the variety and the admiration, said Pip. Yes, I suppose so. Are you happy living with Mr. Habit Pocket? She asked. उसको बताती है कि वो किस तरह से लोगों से मिलने जा रही है और किस तरह लोगों के बारे में जानने जा रही है, और उसको बोलती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ बहुत सारी तारीफ़ें जो हैं वो मिली होंगी और तुम उससे बहुत ज़्यादा खुश होगे। एंड देन उससे वो इंक्वायर करती है कि वो हैबिट पॉकेट के साथ वहाँ रहते हुए खुश भी है या नहीं है। I live pleasantly there, answered Pip. At least as pleasantly
as I could anywhere away from you. You silly boy, said Estella quite calmly. You must come and see me when you think it proper. उसको बोलती है कि तुम जब भी चाहो मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो. You have already been mentioned to the family. Now I believe we have arrived. She said. Pip watched Estella enter the world. वो रास्ते पे चलते हुए बातें करते हैं and then she says कि हम लोग पहुंच चुके हैं. Pip watched Estella enter the old respectable house, thinking of himself. वो उस घर के अंदर दाखिल होते हुए उसको देख रहा होता है. Pip and thinking to himself, अपने बारे में सोचते हुए. Pip watched Estella enter the old respectable house, thinking to himself. वो अब खुद से सोच रहा होता है. How happy I would be if we lived there together. कहते हैं कि कितनी अच्छी बात होती कि हम दोनों इकट्ठे वहाँ रहते. However, deep down inside, he knew that this was an impossible dream. खुद से वो सोचता है बड़ा डीपली कि मुझे पता है कि ये इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन ख्वाब ही हो सकता है. As Pip became more familiar with his expectation, he began to notice changes in himself because of his improved circumstances. वो खुद जो है अपने हालातों वाक़यात को देखते हुए पिप खुद भी अपने अंदर जो चेंजेस हैं उनको फील करना नोटिस कर देता है, शुरू कर देता है. Pip realized his character was affected in the worst way, but it was the strong uneasiness he had about his behavior towards Joe that kept him awake at night. He did not feel that he had treated Biddy much better either. Perhaps he would have been happier if he had ever seen Miss Havisham and simply become a man working with Joe on the forge. Pip wondered what good he did anyone. His expensive lifestyle led him into difficulties with money. अब वो अपना lifestyle जो है वो जाहिर है जो जैसा गुजार रहा है इसमें उसको बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत है और of course वो lifestyle expensive भी है. अब उसका जो expensive lifestyle है वो उसको मुश्किलात की तरफ लेकर जा रहा है. He began to get into debt and because of his influence Herbert did so too. अब उसका क्या हो रहा था, डेट का मतलब होता है कर्ज. अब क्या हो रहा था कि वो लॉस की तरफ जाता जा रहा था, कर्ज की तरफ जाता जा रहा था अपने उस एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से, क्योंकि उसका असर जो है वो हर्बर्ट के ऊपर भी पड़ रहा था एंड ही वाज डूइंग द सेम. Pip would happily have taken care of Herbert's debt, but his friend was proud and would not hear of it. Pip always felt better when he sat to write down his expenses. Pip जो है वो हमेशा better feel करता था जब भी बैठकर अपने expenses को note down करने की कोशिश करता था या note down करता था. He felt that he was taking some kind of responsibility for himself. वो खुद को बड़ा responsible feel करता था जब वो ये काम कर रहा होता था. He also encouraged Herbert to do the same और वो Herbert को भी ऐसा ही करने को बोलता था. One evening while they were sitting at their desks doing this accounting, a letter arrived for Pip. It was from Trabb and Co. The undertaker's eye. It told Pip about the death of his sister and of the funeral date the following week. अब ये काम कर रहे थे वो एक दिन बैठे हुए तो उन्हें एक लेटर मिलता है, एक नोट मिलता है जिसके अंदर ये मेंशन किया गया होता है कि उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, हो गई है. आपको पता है कि शी वाज एक्सीडेंटली इंजर्ड और बिडी जो है वो मिसेस जो की टेक केयर कर रही होती है और बहुत बुरे तरीके से उनकी मेमोरी अफेक्ट हुई होती है मिसेस जो की. उनकी आईसाइट अफेक्ट हुई होती है और उनकी सेंस ऑफ हेयरिंग जो है वो अफेक्टेड होती है. सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ टॉकिंग जो है वो उनकी एंड देन उनका जो ब्रेन है वो डैमेज होता है. मेमोरी उनकी जो है वो इट इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट. तो अब एट द एंड ही जस्ट गॉट अ लेटर and got about his sister's
डेथ, यानी मिसेस जो की जो है वो डेथ हो जाती है और उस लेटर के अंदर मेंशन की होती है डेट फ्यूनरल की। फ्यूनरल आपको पता है जनाजे को बोला जाता है, जब कोई आदमी जिसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो बरियल सेरेमनी होती है, जो तदफीन होती है, उसको हम जनाजा या फ्यूनरल बोलते हैं। Although his sister had been strict and hard on him, Pip felt sad that her life had ended and returned to Joe's home for the funeral. Although उसकी जो सिस्टर हैं बहुत सख्त होती हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी बहन होती हैं और वो उनके लिए बहुत बुरा फील करता है and ended the return to Joe's home for the funeral, और वो जो के घर जाता है funeral के लिए. He suddenly felt violent anger at the person who had attacked his sister. एकदम से उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो शो करता है उस आदमी के लिए जिसने उनकी बहन के ऊपर, उसकी बहन के ऊपर अटैक किया होता है, हमला किया होता है. If he had the proof, अगर उसके पास कोई सबूत होता, he would have followed those responsible to the ends of the death. तो वो उन एंड ऑफ द अर्थ, तो वो उनको जो है अगर उसके पास कोई प्रूफ होता तो वो इस दुनिया के आखिरी कोने तक उनका पीछा करता उनको पकड़ने के लिए. After the funeral, Pip spoke to Biddy. Did they discover anything else about who did it? He asked her. अब Pip जो है वो funeral के बाद Biddy को मिलता है और पूछता है कि उसकी जो बहन का जो केस है उसके बारे में कोई उनको कोई बात पता चली है, उन्होंने कोई नई चीज़ दरियाफ्त की है या नहीं की है. डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ को दरियाफ्त करना, कि उन्हें कुछ कोई नई चीज़ पता चली है या नहीं चली है. नो रिप्लाइड बिडी. बिडी उसको जवाब देती है और बिडी ने उसको जवाब दिया कि नहीं. डू यू नो वट एवर हैपन टू ऑलेग, he asked. From the color of his clothes, I think he is working in the queries these days. Queries these days, she replied quietly. कहती है कि मुझे लगता है वो किसी कान, क्वेरीज बोलते हैं जो कान होती है ना, जैसे कोयले की कान है, सोने की कान है, हीरे की कान है, तो वो जो कान होती है जहाँ से वो चीज़ निकल रही होती है उस को उस जगह का जो है वो कान बोला जाता है. तो वो कहती है कि उसे कपड़े देख के अंदाजा होता है कि वो किसी काम में काम कर रहा है. This at least was good news for Pip. He was happy to hear that Orlick no longer worked at Miss Havisham's. उसको खुशी होती है ये जान के कि ऑर्लिक जो है वो मजीद मिस हैविशम के घर पे काम नहीं कर रहा है. Pip left again for London on the morning after the funeral. He went to the forge where Joe was already too busy to say गुड बाय. वो उसको मिलने के लिए उसकी फोर्स, उसकी वर्कशॉप में भी जाता है जहाँ वो ऑलरेडी जो फ्यूनरल पे आए हुए लोग होते हैं उनको खुदा हाफिज बोल रहा होता है. गुड बाय डियर जो. नो डोंट वाइप योर हैंड्स फॉर गुडनेस sake. Give me those hands as they are. I shall be back to visit you soon, stated Pip. अब वो उसको भी गुड बाय बोल रहा होता है, उसको बोल रहा है कि तुम्हारे हाथ जैसे भी हैं तुम इसी तरह से अपने हाथ मुझसे मिला लो, इनको साफ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें. एंड आई शैल बी बैक टू विजिट यू सून, और मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए जल्द ही आऊँगा. Yes, come soon and come often, Pip said Joe sadly. अब जो obviously उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो he is bit sad, और वो उसको बोलता है कि हाँ प्लीज तुम जल्दी वापस आना. Biddy was waiting at the kitchen door with some milk and crust of bread. बिडी उसका इंतजार कर रही होती है किचन डोर पे खड़ी हुई, कुछ मिल्क लेके और ब्रेड लेके. Pip accepted them gratefully and then set out with tears in his eyes. Obviously, Mrs. Joe was his sister and he is a bit sad, और वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है लेकिन अपनी आंखों में, उसकी अपनी आंखों में आंसू आए हुए होते हैं. Habit and Pip's that went from bad to worse. अब Habit के Pip के जो कर्ज थे
वो बैड्स जो थे वो शदीद बुरे हो चुके हुए थे. वर्स मीन होता है शदीद बुरे. Therefore, Pip was relieved on his 21st birthday when he was called to Mr. Jagger's office and given the grand sum of 500 pounds. उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला जब उसकी बर्थडे पर मिस्टर जैगर ने अपने ऑफिस में बुलाकर उसको 500 pounds दिए. He was going to receive this annually from now on. अब उसको ये अमाउंट जो थी वो annually मिला करेगी इसके बाद. Have you any questions? asked Mr. Jagger. सब Mr. Jagger उसको पैसे देने के बाद पूछते हैं कि तुम्हें कुछ पूछना है, कोई सवाल है तुम्हारे पास? Just one, सिर्फ एक ही सवाल है. Will my benefactor he made known to me today? asked Pip. क्या तुम मुझे आज मेरे बेनिफेक्टर का नाम बताओगे? No, नहीं. And when your benefactor decides to make themselves known to you, I shall no longer be of service, said Mr. Jagger. And when your benefactor decides, जब भी तुम्हारा benefactor जो है वो उसको decide करेगा to make themselves known कि वो तुम्हें उसका नाम जो है वो तुम्हें बता दिया जाए, कि जब भी तुम्हारा जो benefactor है वो ये decide करेगा कि उसका नाम तुम्हें बता दिया जाए, तो उसके बाद मैं उसकी जो सर्विसेज है, उसकी जो जॉब है वो नहीं करूँगा. As Pip left Mr. Jagger's office, a thought occurred to him. जैसे वो निकलता है उसके दिमाग में एक ख्याल उभरता है. He went to a clerk who worked for Jaggers, and after some discussion, an arrangement was made. अब वो जैगर के क्लर्क के पास चला जाता है और कुछ डिस्कशन करने के बाद कुछ अरेंजमेंट जो है वो करता है. पिप वुड गिव हाफ ऑफ हिज मनी टू हर्बर्ट. पिप जो है वो अपनी आधी जो अमाउंट है मनी जो है वो हर्बर्ट को दे देगा विदाउट हर्बर्ट रियलाइजिंग इट, और हर्बर्ट को पता भी नहीं चलेगा. द क्लर्क अरेंज्ड एवरीथिंग. अब वो इस बारे में क्लर्क जो है वो हर चीज़ को अरेंज कर लेता है, यानी वो क्लर्क के थ्रू ये करने की कोशिश करता है ताकि हर्बर्ट को पता भी नहीं चले. A few days later, Herbert told Pip of some wonderful news he had had. कुछ दिनों के बाद हर्बर्ट जो है वो पिप को एक बहुत ही शानदार खबर सुनाता है. At least my expectations have done some good to somebody, thought Pip. He cried bitterly in his room at that night. कहते कि Herbert told Pip of some wonderful news he had. At least कम अज कम माई एक्सपेक्टेशंस जो मेरी उम्मीदें थी हैव डन समथिंग गुड. उन्होंने किसी के साथ तो कुछ अच्छा किया है ना. थॉट पेप जो है वो इस बारे में सोचता है और बहुत बुरे तरीके से रोना शुरू कर देता है. ही क्राइड बिटरली. बहुत बुरे तरीके से. बिटरली का मतलब होता है बहुत शिद्दत से, बहुत बुरे तरीके से, शिद्दत से वो रोया इन हिज रूम दैट नाइट. उस रात वो अपने कमरे में बहुत शदीद तरीके से. This is all for today. You people sit now quietly and read the whole chapter of your novel and let me know if you find any problem. I would explain this chapter to you again. Take care. Have a good day. Allah Hafiz.